Today we will talk about organs of United Nations. In the last class, organs of United Nations. Okay. In the last class, we talked about how what are the international institutions in which we talked about United Nations, World Trade Organization, ICC, International Criminal Court, your International Committee for Red Cross, and so on. Today we will talk about organs of United Nations. So basically, United Nation, as we discussed yesterday in the last class, it is so United Nation was basically just a moment. So your United Nation is basically an intergovernmental organization which is having the characteristics of being non-governmental. Intergovernmental means that government of various nations come together, but United Nation in itself is a non-governmental entity because it does not have a government of its own. Are we clear with it? So there are Yes, six ma'am. organs. Okay. There are six organs of United Nations. First one is your United Nations General Assembly. Now, why this is important? Because international law is totally revolving around United Nations. Then your first one is your United Nations General Assembly. Second is your United Nations Security Council. This is like the cabinet. In India, we have a cabinet. जैसे पार्लियामेंट होता है इंडिया में, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होती है, जिसमें कि हमारी पार्लियामेंट में सारे स्टेट्स के जो इलेक्टेड एमपीज हैं, दे कम एंड दे सिट एंड दे मेक लॉ फॉर द कंट्री. सिमिलरली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, it makes law for the international plane so that we can achieve the purpose of why United Nations was formed. Now, this United Nations Security Council, it is like the cabinet. जैसे हमारे पार्लियामेंट से ही जो इलेक्टेड एमपीज हैं, दे बिकम प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर. तो उन सारे 500 प्लस जितने भी एमपी इलेक्ट होते हैं फ्रॉम राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, जितने भी मेंबर्स होते हैं, all of them do not become ministers. Only few become ministers, and that is why the ministries combined together, we call it cabinet. Similarly, United Nations Security Council को भी हम cabinet की तरह देख सकते हैं, because United Nations General Assembly में जितनी भी countries signatory हैं United Nation Charter की, they are 193 in number. All of them are part of United Nations General Assembly, whereas only 15 countries are members in United Nations Security Council. And that is why it can be said to be like a cabinet of India. Then the third organ is International Court of Justice, which we have already talked about. Then there is this United Nations Trusteeship Council. This is not relevant. Trusteeship Council पहले यूज की जाती थी ताकि कुछ जो टेरिटरीज हैं, कुछ कंट्रीज हैं, उनकी ट्रस्टीशिप दूसरी कंट्रीज में वेस्टेड होती थी. सो बेसिकली ट्रस्टीशिप काउंसिल was more active during the time when colonization was happening. Then we have United Nations Secretariat. So in if in India, we also have secretariats in India. So there is this PM Secretariat, there is this CM Secretariat, Secretariat for Vidhan Sabha and all these things. So Secretariat is basically जो लोग काम को आगे proceed करते हैं. So they are like thousands of people who get employed in UN Secretariat. जो भी डिसीजन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पास करती है, उनको इम्प्लीमेंट कराना, उनसे रिलेटेड पेपर वर्क होना, ये सारा काम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट में चला जाता है. एंड इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल.
Okay. So a person named Secretary General heads all the affairs that happens in United Nations Secretariat. Then last one is your Economic and Social Council. So your Economic and Social Council is responsible for time to time recommendations regarding improving the economic and social status of the member states. Are we clear with the introduction of the six organs? Yes, ma'am. Any doubts? Okay, so what is the most important feature that we need to discuss is United Nations General Assembly and United Nations Security Council. If any one of you wants to take a screenshot, you can. Otherwise, I'll erase the screen. All right. Now, United Nations General Assembly. Let's just have a quick look at what it does. Okay, so as I just told you that your United Nations General Assembly is the legislative organ. It is responsible for laying out the legislations. For example, you can write that Convention against Genocide, Convention on Prevention of Genocide 1948 was drafted and passed by your United Nations General Assembly. So basically इसका पर्पस क्या है कि जो सब्जेक्ट्स उसके आगे अपीयर हो रहे हैं उन पर लॉ बनाना एंड उनको अप्लाई कराना. So now what are these convention and treaties? We will also refer to them. But United Nations General Assembly जो है, the first function is that it is the legislative organ of the United Nations. Now, there are till date, there are 193 signatories to UN Charter. और जितने भी लोग UN, जितनी भी countries UN Charter को subscribe करती हैं, sign करती हैं, all of them become member of General Assembly and all of them have one vote each. Okay? All of them have one vote each. Now, your United Nations General Assembly, apart from being the legislative organ, it has some other functions also. This is the first function. Second function is making the United Nations budget. जो बजट का काम है वो भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली करती है. इलेक्शन करवाना फॉर द मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 मेंबर्स जा सकते हैं. So looking into the elections of Security Council in the manner they will be conducted, a Security Council, as well as your Human Rights Commission, your Economic and Social Council, ENSC, जो हमने ऑर्गन पढ़ा, ऑल इनमें जितने भी इलेक्शंस होते हैं फॉर चेयरमैन एंड ऑल दैट, वो सब भी यूनाइटेड नेशंस ही करवाता है. Now, for a charter, sorry, for any convention or any law to be passed in United Nations General Assembly, we need 2/3 of majority. Are we clear? Yes, ma'am. 2/3 of the majority is required for a resolution to be passed in United Nations General Assembly. Okay. Now moving on to the next organ, United Nations Security Council. So basically, your one thing that you will remember is that your United Nations General Assembly is performing the legislative function. जैसे हमारे parliament जो है, it drafts the law, it forms the law, it passes the law. In India, maybe we have many type of majorities. For example, 2/3 भी होती है, हमारे पास 51% majority भी होती है. We also have 2/3 plus ratification of states to pass any law. Similarly, United Nations General Assembly, ये इंडिया का position है. Now, similarly, United Nations General Assembly, if they are drafting any law, then it has to be passed by 2/3 of the members sitting and voting. All right. Now, your United Nations Security Council, moving on to the next
Next organ, which is United Nations Security Council. Your United Nations Security Council is primarily responsible for security and peace. Where are others? Are they not joining today? No idea, ma'am. Can you ask them once if they are joining or not joining? Okay, ma'am. Hmm. रिया का तो कुछ वाईफाई का इशू आ रहा है, उसकी क्लास अभी लीव की है। बाकी सबका नहीं पता अभी। मैसेज किया है मैंने। Okay, okay. Fine. We will share the recording and then we can continue. Okay. ओके मैम। Yeah. So United Nations Security Council, it is primarily responsible for the security and peace purposes. Now, what happens is that जैसे एक कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड बनाने की बात हुई कि हम कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड बनाएंगे ताकि कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो जेनोसाइड कंडक्ट ना करे. Now this was a law which legislature made. Security Council क्या करता है कि अगर कहीं पे भी in the member states, किसी भी कंट्री में अगर there is a violation of security and peace, then वहां पर यूनाइटेड नेशन immediately act करेगा. It will pass a resolution, we call it Security Council resolution, and वहां पर वो aid भेजेगा. जो भी एड रिक्वायर्ड होगी, जो भी मेजर्स रिक्वायर्ड होंगे, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विल प्रोवाइड दैट स्टेट विद दोज मेजर्स फॉर द पर्पस ओनली ऑफ सिक्योरिटी एंड पीस. Okay, now your United Nations Security Council, जितना भी वर्ल्ड सिक्योरिटी और पीस से रिलेटेड डिस्कशन होगा, जितना भी सिक्योरिटी एंड पीस से रिलेटेड डिसीजंस देने होंगे, वो सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देगा. प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक और फंक्शन होता है टू इलेक्ट द जज इन आईसीजे. जो आईसीजे में जजेस इलेक्ट होते हैं वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट करता है. आर वी क्लियर? यस मैम। Yes. So, let's talk about composition of United Nations Security Council. Now, as I was telling you, it consists of 15 members, जिनमें 5 members are permanent and 10 members are ad hoc. पहले जो ये 15 members होते थे, earlier it used to be 11 members with 5 permanent members and 6 ad hoc members. Now these 10 ad hoc members, all of them have a tenure of 2 years and they cannot be appointed consecutively. For example, if a country is appointed for 2022 to 24, तो अगला जो अपॉइंटमेंट टर्म आएगा 2024 टू 26, उसमें ये कंट्री जो है वो अपॉइंट नहीं होगी एज अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, नाउ जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दे आर यूएसए, यूके, रशिया, और यू कैन कॉल इट रशियन फेडरेशन, चाइना, फ्रांस. Now, why? What is the importance of these permanent member? It is that these permanent वीटो members पावर। वीटो पावर. यस, दे हैव वीटो पावर. कोई भी रिजोल्यूशन जो है वो तब तक पास नहीं हो सकता जब तक ये 5 के 5 मेंबर्स उसमें कंसेंसस ना दें. अब कोई भी एक कंट्री अगर कंसेंट नहीं देती है, देन द वीटो पावर will come into play and that resolution will not be passed. So one of the main reasons why United Nations cannot do anything for Russia Ukraine crisis that is happening is because Russia is a member state of Permanent Council.
परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कोई रेजोल्यूशन पास कर नहीं सकता, बिकॉज इट इज जनरल असेंबली कैन नॉट पास एनी रेजोल्यूशन बिकॉज इट इज नॉट entrusted with the functions of peace and security। सिक्योरिटी काउंसिल ही कर सकता है, और रेजोल्यूशन पास करने के लिए रशिया का कंसेंसस उसमें होना चाहिए। एंड व्हाई वुड रशिया allow some kind of law or some kind of resolution against its own self? Therefore, United Nations is of zero importance right now for what is happening in Russia and Ukraine. Okay. यस Now, मैम। yeah, so we have this veto. Okay, and even in अब सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है, अगर हमें उसको पास कराना है तो हमें उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। लेकिन उस 2/3 मेजोरिटी में जो ये 5 मेंबर स्टेट्स हैं, इनका कंसेंट होना ही चाहिए। यानी कि हमें 15 मेंबर्स में से किसी भी रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए 10 का कंसेंट चाहिए, जिसमें से 5 ये होने ही चाहिए एंड इनमें से कोई 5 का कंसेंट चाहिए। Okay, so 2/3 majority rule applies for United Nations Security Council resolution as well. Now, India का जो last term था, India was elected for 2020 to 22 for 2 years, and it has been elected as a member of United Nations Security Council for 8 times till now. ठीक है? Are we clear? So, अभी इसका एग्जाम्पल यस मैम। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन का एग्जाम्पल है कि देयर वाज अ ट्रिब्यूनल आईसीटीआर। आईसीटीआर इज इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा and International Criminal Tribunal for former Yugoslavia. So basically, Rwanda and Yugoslavia are the countries in the continent of South Africa. सॉरी अफ्रीका। व्हाट हैपेंड वाज यहाँ पर कम्युनल वॉर्स जो हैं हो गए थे, एंड देयर वाज अ लार्ज अमाउंट ऑफ जेनोसाइड एंड वॉर क्राइम्स बीइंग कंडक्टेड। सो यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ही रिजोल्यूशन पास किया था, ट्रिब्यूनल बनाया था टू ट्राई द ऑफेंसेस दैट वर बीइंग कमिटेड। एक ट्रिब्यूनल बना था रवांडा के लिए, एक बना था युगोस्लाविया के लिए। Okay, so these are few examples where United Nations Security Council has passed the resolution. एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशन है, दे आर लेजिस्लेटिव इन नेचर। उसका एग्जांपल कुड बी, जस्ट लेट मी चेंज द इंक ऑफ पेन। यस, सो आई राइट इट हियर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एग्जांपल, एक तो जेनोसाइड वाला जो आई टोल्ड यू, जेनोसाइड कन्वेंशन 1948। अनदर कैन बी योर यूनाइटेड नेशंस protection of child rights, United Nation protection of child rights, protection of rights of child, UNPRC. It was passed in 1992. What happened? Okay, we have space here. It was passed in 1992. Okay, so these are some examples in which United Nations General Assembly passed resolution. So they are more legislative in nature. Are we clear? यस मैम। Hmm. Right. Now, your we have International Court of Justice. International Court of Justice has its own statute, which we call ICJ statute. So it is entrusted with the judicial powers. Okay, it has the judicial powers. It also has advisory jurisdiction like Indian Supreme Court. So your advisory jurisdiction, we also, the example in which advisory jurisdiction was taken is the reparation of injury case, which we did in the last class. Okay. Now, ICJ, you don't need to look much into it. You just remember ICJ is headquartered at Hague, The Hague, New York. Okay. Then next is your
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम होता है कि देखना कहाँ कहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस या सोशल क्राइसिस, कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं मतलब कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो इट विल मेक अ रिपोर्ट. It will recommend United Nations General Assembly to make a law or take a legislative action in that regard. It just make recommendations and policies. Okay, Secretariat, I already explained you that it just functions as it functions in administrative role. Now, अब जो countries हैं, see, why do we need a secretariat is because United Nations General Assembly plus United Nations Security Council, इन दोनों में क्या है, मेंबर स्टेट्स हैं. अब एक कन्वेंशन या एक रेजोल्यूशन अगर पास हुआ, इसको लेट्स सपोज 80 कंट्रीज ने साइन किया, तो अब जो ये कंट्री के डिप्लोमेट्स हैं या जो कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू डू द पेपर वर्क अबाउट दैट, राइट? सो टू एग्जीक्यूट और टू डू द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, हमारे पास यूनाइटेड नेशन में एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं यूएन सेक्रेटेरिएट. Okay, now this UN Secretariat, it performs the administrative functions which are done in the supervision of one person called Secretary General. Are we clear? Next is यस मैम. ट्रस्टीशिप काउंसिल. पहले हुआ करती थी, अब इसका रोल बिल्कुल मतलब it's very minor in nature. Basically, it was to provide trusteeship of some weakened countries to developed countries and so trusteeship council is not something we need to look into now. Okay, now let's move to organs of United Nations. Are we clear with it? Any doubts? नो मैम, नो डाउट्स. Third world countries and their interactions with international law. Third world countries and their interaction with international law. Now, what are third world countries? Basically, जब यूनाइटेड नेशंस बन रहा था उस टाइम पे देयर वाज अ लॉट ऑफ colonization. Even India was a colony of Britishers. Australia was a colony of Britishers. Pakistan was a colony of Britishers. So there were many countries which were colonized, and later on they became free one by one. So all these countries which became free from colonization, we usually call them the third world countries. So India, Africa, Australia, your Pakistan, Afghanistan, all of these countries are third world countries. Now the question is ki, how have they been interacting with international law? क्या इंटरनेशनल लॉ के आने से इनको फायदा हुआ है या फिर इनको नुकसान हुआ है? व्हाट इज देयर रिएक्शन विद द इंटरनेशनल लॉ? बिकॉज सी, इंटरनेशनल लॉ जो है, it was heavily dominated by the developed nations because of course security council में हमारे सारे developed powers हैं. We call them big bullies. United Nations, sorry, USA and your Russia, ये आपस में बिल्कुल opposite चलते हैं, and that is why we call them big bullies. क्योंकि जो इधर का continent है, our एशियन कॉन्टिनेंट एंड द रशियन कॉन्टिनेंट, यहाँ पर पूरा रशिया का बोला बाला चलता है, एंड वेयर एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्रोल द नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स. सो दीज टू आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, and that is why we call them big bullies. Now, how their presence in the international law is affecting the third world countries? So there is no
dispute that USA and Russia has been responsible for many of the wars that have been conducted. Now, if you look at the wars, there was this Vietnamese war. वियतनाम में क्या हुआ था? वियतनाम नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड था, दोनों में वॉर छिड़ गई, एक साइड को यूएसए सपोर्ट कर रहा था। जैसे ही रशिया को पता चला कि वन साइड इज सपोर्टेड बाय यूएसए, रशिया ने दूसरी साइड को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सो ऑफन क्या होता है कि यूएसए और रशिया कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं हमेशा। द रीजन ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। Your Russia follow a strict socialism ideology, whereas USA follows a liberal ideology. So that is why their ideologies are often in conflict, and therefore Russia and USA are responsible for number of wars that has happened in the history. Even the Afghanistan Taliban conflict has association with USA and Russia because they influence the world peace and security by their own means. Now, just a minute. Now, let's talk about the reaction of third world countries with international law. जो एशिया third world countries are basically Asian and African countries. Most of them are the part of third world countries, as I just told you. Now, इनमें क्या है? They interact with international law as if international law was developed by the developed countries only. Because of course, जब international law develop हो रहा था, so many of these countries were colonies of Britishers or were colonies of Russia or French people. Portuguese or Pondicherry, in fact, जो इंडिया में है, that was also a French colony. Goa was a Portugal colony. So we were colonized in many ways. Now, जब इंटरनेशनल लॉ डेवलप हो रहा था, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने इसको एक बिटरनेस के साथ देखा दैट दिस इज ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ डेलिब्रेशन बाय द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज विच आर द डेवलप्ड नेशंस ऑफ कोर्स। नाउ ऐसा माना जाता है कि सिंस दे आर सीइंग इट विद बिटरनेस, दे डू नॉट फॉलो द लॉ वेरी हैप्पीली। ओके, अब क्या होता है कि एक्चुअल पिक्चर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। सबसे ज्यादा देयर हैज बीन रिकॉर्ड्स कि सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल लॉ को एम्ब्रेस किया, अच्छे से अपनी कंट्रीज में वेलकम किया, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने ही किया है। सो इवन इंडिया जो है, बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस की जो ट्रीटीज हैं, कन्वेंशन है, इंडिया इज अ पार्टी टू देम। Small nations like Palestine, they are party to a lot of the treaties that have been formulated by United Nations. जो ये new nations हैं, basically why they embraced international law a lot, the reason is idea of sovereignty plus non-aggression. International law ने, even though international law is a product of deliberation by developed countries or first world countries, but the idea of sovereignty and non-aggression was most crucial to third world countries. अब एक कंट्री जो कि कॉलोनाइज्ड थी, वो नॉन कॉलोनाइज्ड हुई, डीकॉलोनाइज्ड हुई, उसको फ्रीडम मिली, इंटरनेशनल लॉ इज गारंटिंग हिम इट्स सॉवरेनिटी। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ किस पे बेस्ड है कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री की सॉवरेनिटी को हार्म नहीं करेगी, ताकि फर्दर वो सिचुएशन वॉर लाइक सिचुएशन में कन्वर्ट ना हो। देन द आइडिया ऑफ नॉन अग्रेशन। अग्रेशन क्या होता है? एक कंट्री या मिलिटेंट ग्रुप ऑफ वन कंट्री अटैक्स अनदर कंट्री, टेरिटरी को अटैक करते हैं, रिसोर्सेस को अटैक करते हैं, या वॉर वेज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया जो यूक्रेन पे कर रहा है, दैट इज एन एग्रेशन ऑन इट्स टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। रशिया ये चाह रहा है कि हम यूक्रेन को अटैक करके वापस यूक्रेन को रशिया का पार्ट बना ले। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अग्रेशन एंड सॉवरेनिटी देयर। सो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक यूक्रेन, लाइक इंडिया, हमें इंटरनेशनल लॉ प्रोटेक्ट करता है। इंटरनेशनल लॉ गारंटीज द सिक्योरिटी टू अवर सॉवरेनिटी,
सो हमारी जैसी जो कंट्रीज होती हैं जो कि कॉलोनाइजेशन के बाद फ्री हुई हैं या किसी भी रीजन से दे बिकेम द कंट्री ऑन देयर ओन, हम हमारी जैसी कंट्री सबसे पहले सब्सक्राइब करती हैं टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन एग्रेशन, कि ना हम अग्रेशन करेंगे, हम किसी और की टेरिटरी में इन्वेड नहीं करेंगे, और अगर कोई हमारी टेरिटरी में इन्वेड करता है तो यूनाइटेड नेशंस इज देयर टू प्रोटेक्ट अस। ओके, आर वी क्लियर? अब एक एक और तरह से जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दे आर इंटरैक्टिंग विद इंटरनेशनल लॉ। देयर इंटरैक्शन इज दे वांट they also want to be permanent member of security council. In fact, if you are aware or if you watch any kind of news, बीच में काफी डिस्कशन हुआ था कि इंडिया इज मेकिंग अटेम्प्ट टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो चाहती हैं कि सिंस इंटरनेशनल लॉ का सिक्योरिटी काउंसिल हैज बीन रूल्ड बाय the first world countries like the countries like France, China, Russia, UK, USA, who are themselves very developed in nation, तो वो चाहते हैं कि मैम थर्ड वर्ल्ड परमानेंट कंट्रीज कंट्री बन कैसे सकते हैं? सॉरी परमानेंट कंट्री मतलब बन कैसे सकते हैं, इसका प्रोसीजर है कुछ? एज सच कुछ डेजिग्नेटेड प्रोसीजर है नहीं। बेसिकली जब यूनाइटेड नेशंस बन रहा था तो दीज कंट्रीज वर बेसिकली द कंट्रीज हु वर सबजुगेटिंग अदर कंट्रीज, तो इन्हीं को बना दिया गया था, लाइक दे हैड पावर विद देम, तो उस तो टाइम पे अब ये जैसे बन गए थे। मतलब इंडिया हम्म। जैसे कोशिश कर रहा था परमानेंट कंट्री बनने का, तो वो कैसे बनता? आयुष, आई हैव टू सी द प्रोसेस एंड देन कम बैक टू यू। ओके मैम। ओके। ओके, यस, सो द प्रोसेस इज कि अगर किसी को परमानेंट मेंबर बनना है तो उसको एक रेजोल्यूशन मूव करना पड़ेगा कि आई वांट टू बी द परमानेंट मेंबर। अब उस परमानेंट मेंबर को बनने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से उसको 2/3 की वोटिंग चाहिए अपने फेवर में, प्लस जो 5 कंट्रीज हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका वीटो चाहिए, एज इन वीटो ऑफ अफर्मेशन कि हाँ, कम इनटू द सिक्योरिटी काउंसिल। So that is why the reason is that you must have seen the Prime Minister being in good contact with Russia as well as UK as well as your USA and even France, but the situations are not so good with China, however. So that is why India cannot really enter into Security Council, क्योंकि अगर चाइना अपना वीटो नहीं देगा तो इंडिया एंटर नहीं कर सकता। So this is the process that you have to move a resolution. 2/3 of the people and 2/3 of the countries members in General Assembly, they have to assent that yes, we want this person to sit in the permanent member as a permanent member of Security Council and the veto of all the 5 members. If this is given, then the party can become a permanent member in the Security Council. Okay, but this is a very hard task given the situation of world today. These 5 countries will not allow very happily other third world countries to come into the picture because they, as I was telling you, they want to be the big bullies. क्योंकि अगर कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री आ गई उसकी भी चलेगी एंड उसके इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो बाकी कंट्रीज से अफेक्ट होंगे, जो कि अल्टीमेटली इन 5 कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशंस पे भी असर डालेंगे। सो इंटरनेशनल लॉ इज नॉट जस्ट अबाउट लॉ मेकिंग बट इट इज ऑल्सो अबाउट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। ठीक है? मैम इन परमानेंट कंट्रीज से इनका स्टेटस छीना जा सकता है? मतलब 5 में से नहीं, 4 कंट्री नहीं हो सकता? दिस दिस कैन नॉट हैपन, दिस ओके कैन मैम। नॉट हैपन, क्योंकि इनके देखो ये मेंबर अगर ये मेंबरशिप से विड्रॉ नहीं कर लेंगे तो ऑफ कोर्स दे कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द परमानेंट मेंबरशिप, लेकिन इन 5 को इनकी इससे हटाने के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप से हटाने के लिए भी वी नीड वीटो। तो कोई कंट्री अपने लिए वीटो देगा ही नहीं ना। यस ओके। गेटिंग? Okay, so what we were talking about was
सो इन लड़ाई आजकल चल रही है वो ये है कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। दे वॉन्ट कि आप परमानेंट मेंबर का नंबर इंक्रीज करो ताकि देर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एज वेल। बट आप कितना ही बढ़ा दोगे, मैक्सिमम आप 5 सीट्स और बढ़ा दोगे, 4 सीट 6 सीट बढ़ा दोगे, बट उसमें आप सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को इनकॉर्पोरेट तो नहीं कर सकते, राइट? इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ। तो यस मैम। these were the few interactions that your third world countries have with international law. तो एक 10 मार्कर आई थिंक इससे बन सकता है। आई डोंट थिंक आएगा, बट अगर आता है तो these points can be put into the picture. Okay. So I think यस मैम। no one is there. We can stop with this topic and we can start the next topic in the new class. Is it fine? ओके मैम। हाँ, इतना वो लोग कवर कर लेंगे and then we can start the new topic. ओके, थैंक यू मैम। All right. Thank you. Thank you, Ayush.